गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स और वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है जेड मोड प्रोजेक्ट इन कश्मीर। टॉपिक आपके सिक्योरिटी के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो कुछ मिलिटेंट्स ने अटैक किया है वर्कर्स को एप्को इंफ्राटेक के, जो कि जेड मोड टनल पर काम कर रहे थे। तो जेड मोड टनल जो है वो एक 6.4 किलोमीटर टनल है गांदरबल डिस्ट्रिक्ट ऑफ कश्मीर में। और ये जो सोनमार्ग है, जो कि एक पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, वहाँ पर ऑल वेदर कनेक्टिविटी देने के लिए बनाई जा रही है। तो जेड मोड टनल प्रोजेक्ट जो है वो ओरिजिनली बीआरओ ने 2012 में जो है वो कंसीव किया था। और ये आइडिया ये था कि शुरू में इसको टनल वे लिमिटेड को ये प्रोजेक्ट दिया जाएगा, लेकिन बाद में जो है NHIDCL को ये प्रोजेक्ट जो है वो दे दिया गया। और इसकी जो है ओपनिंग होनी थी अगस्त 2023 में, लेकिन ये डिले हुआ। फिर 2024 के फरवरी में ओपनिंग होनी थी, लेकिन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने की वजह से जो है इसको जो है इनाग्रेट नहीं कर पाए। ठीक है, अब ये जो टनल है 8500 फीट पर लोकेटेड है, इसकी जो ऑल्टीट्यूड है। और जेड मोड टनल जो है वो पार्ट है जोजिला टनल प्रोजेक्ट का, जो कि ईयर राउंड कनेक्टिविटी देना चाहता है श्रीनगर से लद्दाख के जो है वो हाईवे को। तो जो जोजिला टनल है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है और ये दिसंबर 2026 तक जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। और इससे हमारे को सिर्फ टूरिस्ट डेस्टिनेशंस तक पहुंचने में ही नहीं, बल्कि हमारे को क्विक मिलिट्री एक्सेस भी मिलेगा लद्दाख का, और ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी मिलेगी बिटवीन श्रीनगर, द्रास, कारगिल और लेह। और इसलिए ये वाइटल है इंडिया के डिफेंस फोर्सेस के लिए, जो कि सियाचिन और ईस्टर्न लद्दाख में डिप्लॉय करनी होती है हमें। ठीक है, तो ये जो टेरर अटैक्स हैं, ये रिवाइवल ऑफ टेररिज्म हमें दिखा रहे हैं। एक तरह से पाकिस्तान की जो डीप स्टेट है वो इंडिया के जो जम्मू कश्मीर है वहाँ पर पीस और स्टेबिलिटी को डीरेल करना चाहता है। ठीक है, तो पाकिस्तान जो है वो अपने जो ओल्ड अलाइंसेज हैं उनको री एस्टैब्लिश कर रहा है JNK में, और वायलेंट इवेंट्स जो है वो कंडक्ट करवा रहा है, ताकि इंडिया का जो प्रोसेस है स्टेबलाइज करने का JNK को और मेन स्ट्रीम करने का इकोनॉमी के साथ, वो डीरेल हो जाए या ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए। अटैकर्स ने फोकस कर दिया है पेरिफेरल रीजन्स के ऊपर। मेन वो अब जो है श्रीनगर, अनंतनाग, बारामूला में जो है वो वहाँ पर अटैक नहीं करते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत हैवी सिक्योरिटी है। तो जो छोटे छोटे आसपास के रीजन्स हैं वहाँ पर वो अटैक करना शुरू कर चुके हैं। खासकर जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उनको अटैक किया जा रहा है। अब जो है किशन गंगा प्रोजेक्ट हो, चाहे रेलवे प्रोजेक्ट्स हो बनिहाल या काजीगुंड में, वो भी खतरे में हैं, क्योंकि जो है वो चाहते हैं ऐसा कि यहाँ पर लोगों को या इन्वेस्टर्स को ऐसा लगे कि ये जो है एरिया स्टेबल नहीं है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स हमें नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो अभी तक हमें कोई चाइनीज़ एंगल तो सामने नहीं आया, बट हो सकता है कि चाइनीज़ एंगल भी कुछ ना कुछ पीछे इन्वॉल्व हो। बट जो अटैक है वो एक वाइडर स्कीम दिखा रहा है कि इंडिया का जो इमर्जिंग स्ट्रेटजिक कॉन्फिडेंस है उसको टारगेट किया जाए। तो प्रॉक्सी वॉर जो है JNK में वो अभी तक ख़त्म प्रॉपरली नहीं हुई है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, डीलिंग विद फेक बॉम्ब थ्रेट्स इन एविएशन। ये टॉपिक आपके सिक्योरिटी और इकोनॉमी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो लगभग 100 फेक बॉम्ब थ्रेट्स जो है वो अनोनिमस सोशल मीडिया अकाउंट से जो है वो दिए गए हैं। एविएशन सेफ्टी के ऊपर जो है इसलिए कंसर्न्स दिखाते हैं, और हमारे को कैसे अपने सिक्योरिटी प्रोटोकॉल जो हैं एविएशन सेक्टर में उसको रिवैम्प करना होगा, एनालाइज करना होगा, जब अगर किसी फ़्लाइट को बॉम्ब थ्रेट मिलता है तो। ठीक है, तो मिड ईयर अगर बॉम्ब थ्रेट मिलता है, तो जैसे ही बॉम्ब थ्रेट मिलता है तो बॉम्ब थ्रेट असेसमेंट कमेटी जो है वो क्रेडिबिलिटी पहले तो चेक करती है। फिर पायलट्स जो हैं वो कोऑर्डिनेट करते हैं एयर ट्रैफिक कंट्रोल के साथ कि क्या उन्हें वापस आ जाना चाहिए ओरिजिनल एयरपोर्ट पे, या फिर अपनी कंटिन्यू करनी चाहिए डेस्टिनेशन तक, या फिर नियरेस्ट एयरपोर्ट पर लैंड करना चाहिए। अगर टेक ऑफ से पहले जो है वो थ्रेट मिल जाता है तो एयरक्राफ्ट क्राफ्ट को एक सेक्लूडेड बे में जो है वो मूव कर दिया जाता है। फिर जो है थॉरो चेक्स किए जाते हैं। अगर इंटरनेशनल फ़्लाइट है तो इंडियन एजेंसीज जो है वो इंटरनेशनल ATC के साथ जो है वो कोऑर्डिनेट करती हैं, और सिक्योरिटी एजेंसीज जो है वो डाइवर्ट कर देती हैं फ़्लाइट को नियरेस्ट एयरपोर्ट पर। ठीक है, तो होता क्या है, एयरलाइंस इमीडिएटली एक्टिवेट करती हैं एंटी टेरर प्रोटोकॉल्स और कांटेक्ट करती है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन को असिस्टेंस के लिए। फिर मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन जो है वो होम मिनिस्ट्री के साथ और ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के साथ मिलकर कोऑर्डिनेट करती हैं इन थ्रेट्स को जो है वो डील करने के लिए। तो अब हुआ क्या है कि ऐसे जो थ्रेट्स मिल रहे हैं, सिक्योरिटी को टाइटन कर दिया गया है, CCTV कवरेज भी बढ़ा दी गई है। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी और एयरपोर्ट स्पेसिफिक बॉम्ब थ्रेट असेसमेंट कमेटीज़ जो है वो डायनामिक अप्रोच फॉलो कर रही हैं कि हर थ्रेट को रीसेंट केसेस के हिसाब से एवेल्युएट किया जाए। लेकिन हो क्या रहा है कि जो ये थ्रेट्स मिल रहे हैं, इसमें जो थ्रेट जो देते हैं वो VPN का इस्तेमाल करते हैं या अनोनिमस सोशल मीडिया अकाउंट्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से जो ट्रैकिंग है वो डिफ़िकल्ट हो जाती है। इंडियन गवर्नमेंट जो है वो कुछ लेजिस्लेटिव चेंजेस भी प्लान कर रही है, ताकि फेक बॉम्ब थ्रेट्स जो हैं जो एयरलाइंस को टारगेट करते हैं
हैं उनसे डील किया जा सके। तो होगा क्या, अभी तक कोई लीगल प्रोविज़न जो एग्जिस्ट नहीं करते हैं जो कि बॉम्ब थ्रेट्स को, एयरक्राफ्ट के ऊपर जो बॉम्ब थ्रेट्स होते हैं उससे स्पेसिफिकली डील कर सकें। तो गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि मॉडिफाई किया जाए एयरक्राफ्ट सिक्योरिटी रूल्स, ताकि जो है कल्प्रिट्स ऑफ होक्स बॉम्ब थ्रेट्स जो है उनको नो फ्लाई लिस्ट में डाला जा सके। ठीक है। फिर सप्रेशन ऑफ अनलॉफुल एक्ट्स अगेंस्ट सिविल एविएशन, सेफ्टी ऑफ सिविल एविएशन एक्ट भी प्रपोज किया गया है, उस पर अमेंडमेंट्स बेसिकली, जो 1992 का एक्ट है। और ये एक्ट अभी तक सिर्फ इन फ्लाइट इंसिडेंट्स पर एप्लीकेबल है, लेकिन कहा जा रहा है इसको और एक्सपेंड किया जाएगा, जिसमें कि हैवी फाइन्स और जेल टाइम भी प्रपोज किया जाएगा। लेकिन चैलेंज यही है कि कैसे इन थ्रेट्स को मिटिगेट किया जाए ताकि ये सिस्टम को स्ट्रेन ना करते रहें। ठीक है। तो नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ये टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जो 2024 का एडिशन है IAEA के क्लाइमेट चेंज और न्यूक्लियर पावर रिपोर्ट का, वो रिलीज़ किया गया है और कह रहे हैं कि सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है अगर न्यूक्लियर पावर को एक्सपैंड करना है। तो IAEA है क्या, वर्ल्ड की फोरमोस्ट इंटर गवर्नमेंटल फोरम है साइंटिफिक और टेक्निकल कोऑपरेशन करने के लिए न्यूक्लियर फील्ड में। तो ये वर्ल्ड में हम इसको एटम्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं, और UN की फैमिली में ही आती है ये। और सेफ सिक्योर पीसफुल यूजेस ऑफ न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये उसके ऊपर काम करती है। तो इसको एस्टैब्लिश किया गया था एज ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन, और ये इसकी अपनी इंटरनेशनल ट्रीटी है IAEA स्टैट्यूट। हेडक्वार्टर इसका वियना में है। 178 मेंबर स्टेट्स इसके मेंबर हैं। जनरल कॉन्फ्रेंस जो होती है उसमें सभी मेंबर होते हैं। ठीक है। और वो हर साल मिलती है जो है जनरल पॉलिसीज़ के ऊपर डिबेट करने के लिए। फिर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हैं जो एजेंसी के स्टेचुटरी फंक्शंस जो है वो कैरी आउट करते हैं। डे टू डे अफेयर्स जो है वो सेक्रेटरीट द्वारा रन किए जाते हैं। तो ऑफ कोर्स इसका जो फंक्शन यही है कि सेफ सिक्योर और पीसफुल यूज़ ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज़ जो है प्रमोट किया जा सके, और एक्सचेंज ऑफ साइंटिफिक और टेक्निकल इन्फॉर्मेशन जो है वो मेंबर स्टेट्स के बीच में की जा सके, और इंटरनेशनल कैपेसिटीज़ जो है वो बढ़ाई जा सकें ताकि न्यूक्लियर और रेडियोलॉजिकल इंसिडेंट्स को डील किया जाए। ओके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं फोर्थ न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन। ये टॉपिक सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया ने क्वाइटली फोर्थ न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन जो है वो शिप बिल्डिंग सेंटर विशाखापट्टनम में जो है वो लॉन्च कर दिया है। तो इसका नाम रखा गया है, कोड नेम जो है S4 स्टार। ठीक है। लगभग 75% इसमें इंडिजिनस कंटेंट है। K4 बैलिस्टिक मिसाइल से इक्विप्ड है ये। लगभग 3500 किलोमीटर की इसकी रेंज है। और ये INS अरिहंत, INS अरिघाट और INS अरिधमान के बाद ये फोर्थ जो है ये सबमरीन होगा। तो INS अरिधमान जो है वो अभी तक कमीशन तो नहीं हुआ है और वो नेक्स्ट ईयर कमीशन होगा, लेकिन जो है जो ये जो फोर्थ हमारा सबमरीन है ये जो है पहले कमीशन कर लिया गया है। ठीक है। तो इसका नाम S4 स्टार रखा गया है। ओके। तो SSBN क्या होते हैं? SSBN जो है वो अभी तक सिर्फ US, रशिया, चाइना, UK, फ्रांस और इंडिया ही ऑपरेट करते हैं, हाईली स्पेशलाइज्ड मिलिट्री एसेट्स। तो ये जो सबमरीन्स होती हैं ये हमारे को सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी देती है। मतलब अगर हमारे ऊपर किसी ने पहले अटैक किया तो हम तो बहुत ज़्यादा जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो हमारे पास जो है सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि हम भी जो है वो अपनी सबमरीन्स के थ्रू बाद में जो है उस पर्टिकुलर कंट्री पर अटैक कर सकें। ठीक है। तो ये स्ट्रेटजिक न्यूक्लियर डेटरेंस के लिए बहुत ज़रूरी होता है। कंट्रीज जो सामने अटैक कर रही है उसे ये पता है कि अगर हम इन कंट्री के ऊपर अटैक करेंगे, चाहे हम इन्हें प्रॉपरली भी ख़त्म भी कर दें न्यूक्लियर अटैक से, फिर भी इनके पास इनकी सबमरीन्स कहीं ना कहीं घूमती रहेंगी जो हमें जो है वो सेकंड स्ट्राइक कर सकती है हमारे ऊपर। ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नेचर रिस्टोरेशन लॉ। टॉपिक इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो नेचर रिस्टोरेशन लॉ जो EU द्वारा इनेक्ट किया गया है, इंडिया के लिए एक मॉडल लॉ बन सकता है जिसमें से इंडिया कुछ ना कुछ सीख सकता है। ठीक है। तो ये एक यूरोपियन लॉ है जो कि ट्रिपल क्राइसिस ऑफ क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी लॉस, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन से डील कर रहा है। फर्स्ट कॉन्टिनेंट वाइड कॉम्प्रिहेंसिव लॉ है ये अपनी तरह का। ये बाइंडिंग टारगेट्स रखता है रिस्टोर करने के लिए डिग्रेडेड इकोसिस्टम्स को। अब इसमें क्या है कि मेंबर स्टेट्स जो हैं उनको 20% जो है वो EU का लैंड और सी बाय 2030 तक रिस्टोर करना है। 2050 तक ये जो मेजर्स हैं ये सभी इकोसिस्टम्स जिनको रिस्टोरेशन की रिक्वायरमेंट है उसको उस तक एक्सटेंड कर दिया जाएगा। और इसमें ही टारगेट रखा गया 3 बिलियन एडिशनल ट्रीज लगाने का भी। ओके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं पेट्रोलिंग एग्रीमेंट अलॉन्ग द LAC। ये टॉपिक आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया और चाइना के बीच में एक मेजर डिप्लोमेटिक ब्रेक थ्रू हुआ है और रिज्यूम कर दिए हैं पेट्रोलिंग की फ्रिक्शन पॉइंट्स पर अलॉन्ग LAC इन ईस्टर्न लद्दाख। तो ये जो मई 2020 के टाइम पर जो गलवान क्लैश हुई थी उसमें कुछ की जो है एरियाज़ थे, पैंगोंग सो, गलवान नाला, डेमचौक लद्दाख में, फिर नकुला जो कि सिक्किम में है,
वहाँ पर जो है ये कन्फ्लिक्ट अभी तक चल रहा था। तो बोथ साइड्स जो है लार्ज नंबर ऑफ ट्रूप्स डिप्लॉय कर चुके हैं ऑलरेडी। तो इंडिया और चाइना जो है वो मल्टीपल राउंड्स ऑफ टॉक्स कर चुके हैं कॉर्प्स कमांडर लेवल पर, LAC इन ईस्टर्न लद्दाख में। अब 7 फ्रिक्शन पॉइंट जो हैं ईस्टर्न लद्दाख में, जहाँ पर इंडियन और चाइनीज़ ट्रूप जो हैं कन्फ्रंटेशन में हैं सिंस 2020 में, वो ये फ्रिक्शन पॉइंट्स थे, ठीक है। तो ये नीचे नाम दिए गए हैं PP14, PP15, 17A एट्सेट्रा। तो अब हुआ क्या है कि रिस्टोर कर दिए गए हैं पेट्रोलिंग राइट्स देपसांग प्लेन्स और देमचोक रीजन्स ऑफ ईस्टर्न लद्दाख में, और इंडियन ट्रूप्स जो है वो पेट्रोल कर पाएंगे अप टू PP10 से PP13 देपसांग और चरदिंग नाला इन देमचोक में, ठीक है। जो दोनों साइड्स हैं वो पेट्रोल कर पाएंगे ओल्ड पॉइंट्स जो कि LAC पर थे, और जिसमें 14 से 15 ट्रूप्स होंगे, और पहले ही जो है वो कोऑर्डिनेट किया जाएगा इन पेट्रोलिंग्स को, ताकि जो फ्रिक्शन है वो दोबारा से अवॉइड की जा सके, ठीक है। तो बेसिकली ये पैक्ट इसलिए किया गया है कि रिस्टोर किया जा सके ट्रस्ट बिटवीन टू कंट्रीज़, और ओवरऑल जो है डिप्लॉयमेंट ऑफ ट्रूप्स जो है LOC पे वो भी कम की जा सके, ठीक है। तो सिग्निफिकेंस क्या है, तो इससे अर्ली रिस्टोरेशन ऑफ डिप्लोमेटिक और बायलैटरल पॉलिटिकल टाइज जो है वो रिकिंडल होने का होप है। चाइनीज़ साइड जो है पिछले साल तक तो इसके बारे में बात भी नहीं करना चाहती थी, लेकिन अब ये पैक्ट साइन हो गया है, तो मतलब बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। देपसांग प्लेन्स लगभग 30 किलोमीटर दूर हैं दौलत बेग ओल्डी सेक्टर से, जो कि कराकोरम पास में पड़ता है नॉर्थ में। तो इसलिए देपसांग प्लेन्स पर भी जो ये एग्रीमेंट किया गया है, ये एक स्ट्रेटजिकली बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ई श्रम। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ लेबर जो है उन्होंने ई श्रम वन स्टॉप सोल्यूशन जो है दिल्ली में लॉन्च किया है। तो ये सीमलेस एक्सेस देगा डिफरेंट सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स का अनऑर्गेनाइज वर्कर्स को, जो कि ई श्रम पोर्टल पर रजिस्टर्ड हैं। और जो है प्राइमरी पर्पज़ इसका ये है कि सिंप्लीफाई किया जा सके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को अनऑर्गेनाइज वर्कर्स के लिए। तो ये प्लेटफॉर्म एक्ट करेगा एज अ ब्रिज कनेक्ट करने के लिए वर्कर्स को न्यूमरस बेनिफिट्स जो कि ऑफर्ड किए जाते हैं गवर्नमेंट द्वारा। तो ई श्रम पोर्टल क्या है, लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और एम्प्लॉयमेंट द्वारा 2021 में रजिस्ट्रेशन और क्रिएशन ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल डेटाबेस ऑफ अनऑर्गेनाइज वर्कर्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं मलेरिया। ये टॉपिक आपके सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इजिप्ट को रिसेंटली ऑफिशियली डिक्लेयर किया गया मलेरिया फ्री बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये एक्यूट फेब्राइल इलनेस है जो कि प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स द्वारा होती है, और ये स्प्रेड होती है इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो द्वारा। तो ये एक लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ है, प्राइमरली जो है ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में पाई जाती है। जो फर्स्ट सिम्टम्स हैं मलेरिया के वो यूजुअली 10 से 15 दिन के अंदर बिगन हो जाते हैं। फीवर, हेडेक, चिल्स होना ये एक्सपीरियंस किया जाता है, ठीक है। तो वेक्टर कंट्रोल सबसे मेन अप्रोच रहती है इसमें प्रिवेंट करने के लिए मलेरिया और रिड्यूस करने के लिए ट्रांसमिशन को। तो ये डिसीज़ जो है ये प्रिवेंटेबल भी है और क्योरेबल भी है। ओके, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is Z mode project in Kashmir. This topic is important for your economy and your security section. So recently, suspected militants attacked workers of APCO Infratech, which is an infrastructure company which is constructing the Z mode tunnel on the Srinagar Sonmarg highway in Jammu and Kashmir. So Z mode tunnel is a 6.4-kilometer tunnel which is located in Gandarbal district of Kashmir, central Kashmir. So it is located near Gagangir village, just ahead of Sonmarg, which is a popular tourist destination, and it will ensure all weather connectivity to that area, especially on the Srinagar Leh highway. So Z mode tunnel project was originally conceived by the BRO in 2012, and it was initially awarded to Tunnelway Limited. Later, the NHIDCL took over this project, and a soft opening took place in February 2024, but it was not officially inaugurated due to model code of conduct. Firstly, due to the general elections, and later during the Jammu and Kashmir Assembly elections. Okay, so this stretch is where the tunnel is under construction, and it is situated at an altitude of about 8,500 feet. And Z mode tunnel is part of the larger Zojila tunnel project, which aims to ensure year-round connectivity from Srinagar to Ladakh. And Zojila tunnel is an under construction tunnel which is connecting Sonmarg to Dras in Ladakh, and it is expected to be completed by December 2026. So Z mode tunnel will provide all-weather access to Sonmarg Health Resort, which is crucial for maintaining quick military access to Ladakh. So Z mode tunnel is key to enabling all-weather road connectivity between Srinagar, Dras, Kargil and Leh. And this project is vital for Indian defense forces which are deployed in Siachen and
eastern Ladakh. Okay, so it reflects the revival of this recent attack reflects the revival of terrorism, and this incident suggests a deliberate effort by Pakistan's deep state to derail peace and stability. Okay, so Pakistan's deep state is determined to re-establish its relevance in Jammu and Kashmir by instigating violent events, and their goal is to obstruct India's process of stabilizing J&K. Okay, so the attackers have shifted now the focus to peripheral regions which have low security. Otherwise, the urban areas like Srinagar, Anantnag, and Baramulla are heavily secured. So this attack indicates a larger threat to infrastructure projects in Jammu Kashmir's peripheral regions like the Kishanganga project and the railway projects in Banihal and Kazigund. Okay, so this attack could be part of a wider scheme which aims to target India's emerging strategic confidence, and this also means that the proxy war in Jammu Kashmir is far from over yet. Okay. So the next topic is dealing with fake bomb threats in aviation. This topic is important for your security and your economy section. So nearly 200 fake bomb threats, mostly from anonymous social media accounts, have raised significant concerns about aviation safety in India. In this context, there is a need to analyze security protocols when a flight gets a bomb threat. So upon receiving a bomb threat during a flight, the bomb threat assessment committee convenes to evaluate the credibility of this threat, and the pilots coordinate with air traffic control to determine whether to return to the departure airport, continue to the destination, or divert to the nearest airport. So if the threat occurs before takeoff, the aircraft is moved to a secluded bay for thorough checks in coordination with the air traffic control. Okay, so in case of international flights, the Indian agencies work with international ATC, and the security agencies are also coordinated to divert the flight to the nearest airport. Okay, so airlines immediately activate the anti-terror protocols and contact the Ministry of Civil Aviation for assistance. And Ministry of Civil Aviation, Ministry of Home Affairs, and agencies like the BCAS, that is the Bureau of Civil Aviation Security, they start coordinating closely to address the spate of threats. So, in response to threats, the security has been tightened at airports with an increase in security checks by 10%, and CCTV coverage has also been expanded. Okay, so BCAS and airport specific bomb threat assessment committees are adopting the dynamic approach to evaluate each threat based on recent cases. Okay, but the problem is that there is extensive use of VPN and anonymous social media accounts, which has made tracking difficult. So, Indian government is planning legislative changes to deal with fake bomb threats targeting airlines. Okay, so currently we do not have any legal provisions which deal specifically with the bomb threats to aircraft. So, government is planning to modify the aircraft security rules so as to include culprits of hoax bomb threats in the no-fly list. There is also a plan to amend the Suppression of Unlawful Activities Against Safety of Civil Aviation Act of 1982, and currently this act applies only to in-flight incidents, but now it would also include heavy fines and possible jail time for such bomb threats also. Okay, so the challenge of responding and mitigating such threats continue to strain the system. Okay, so the next topic is International Atomic Energy Agency. This topic is important for your economy section. So 2024 edition of the IAEA's Climate Change and Nuclear Power Report has been released, highlighting the need for a significant increase in investment to achieve goals for expanding nuclear power. So what is IAEA? It is the world's foremost intergovernmental forum for scientific and technical cooperation in the nuclear field. It is widely known as the world's Atom for Peace and Development organization within the UN family. It works for the safe, secure, and peaceful uses of nuclear science and technology, and it was established as an autonomous organization. It has its own international treaty called the IAEA Statute, and its headquarters is located in Vienna, that is in Austria, and it has the General Conference, which consists of all members, and it meets annually to approve the budget and programs and to debate the general policies of IAEA. And there is also a Board of Governors, which carry out the agency's statutory functions. The day-to-day affairs of the IAEA are run by the Secretariat. So then the agency works with its member states and multiple partners worldwide to promote the safe, secure, and peaceful use of nuclear technologies. Okay, so IAEA assists its member states and promotes the exchange of scientific and technical information between them, and it also enhances national, regional, and international capacities to respond to nuclear and radiological threats. Okay.
So the next topic is fourth nuclear powered ballistic missile submarine. This topic is important for your security section. So India has recently quietly launched its fourth nuclear powered ballistic missile submarine at the Ship Building Center in Visakhapatnam. This is codenamed as S4 Star, and this is having 75% indigenous content, and it is equipped with K4 ballistic missiles which have a range of 3500 kilometers. So the first of its class submarine SSBN was INS Arihant, and the second one is INS Arighat. Then there is INS Aridhaman, which will be commissioned next year. Then this S4 star is the formal name is yet to be given to it. Okay, so what is SSBN? So SSBNs are potent and highly specialized military assets. So these submarines are operated only by the US, Russia, China, UK, France, and India, and they are armed with submarine launched nuclear ballistic missiles. So because these submarines are these submarines provide a reliable second strike capability, and they are part of the strategic nuclear deterrence with the principle of mutual assured destruction. So if a country is planning to strike you with a nuclear attack, then it would be knowing that even if they attack you with nuclear weapons, you have these submarines which are operating secretly around the world, and they have this nuclear capability. So this ensures that even after you are attacked first by a nuclear missile or a nuclear attack, you still possess the capability to destroy that enemy through the second strike capability from your submarines. Okay, so this gives them a deterrence that they do not attack you, because there is mutually assured destruction in that case. Okay, so the next topic is nature restoration law. This topic is important for your environment section. So nature restoration law, which was enacted by the EU, is an inspiring model from which India can draw points. So it is a European Union law, which aims to tackle the triple crisis of climate change, biodiversity loss, and environmental degradation. So it is the first continent-wide comprehensive law of its kind. It is a key element of EU biodiversity strategy, which sets binding targets to restore degraded ecosystems. Under the nature restoration law, member states will have to restore at least 20% of EU's land and sea by 2030. By 2050, these measures should extend to all ecosystems requiring restoration, and the target is also to have 3 billion additional trees throughout the EU. Okay. So the next topic is patrolling agreement along the LAC. This topic is important for your security and your international relations. So in a major diplomatic breakthrough, India and China have agreed to resume patrolling at different friction points along the LAC in eastern Ladakh. So we all know, after the Galwan clash, since May 2020, Indian and Chinese troops have clashed at various points along the LAC. These points included Pangong So, Galwan Nala, Demchok in Ladakh, and even Nakula in Lhasa, Sikkim. After this incident, both sides have deployed a large number of troops in the area along this LAC with heavy weaponry. Since then, India and China have held multiple rounds of the talks at corps commander level on the LAC in eastern Ladakh to resolve this standoff. So there are 7 friction points in eastern Ladakh where Indian and Chinese troops have had confrontations since May 2020. So these include PP 14, 15, 17A, north and south banks of Pangong So, Tepsang Plains, and other areas like Charding Nala. Okay, so what has happened is now India and China have agreed to restore patrolling rights in the Depsang Plains and Demchok regions of eastern Ladakh, addressing the long-standing legacy issues that predate the 2020 Chinese incursions. So Indian troops will now be able to patrol up to patrolling points 10 to 13 in Depsang and Charding Nala and Demchok. Both sides will patrol up to old points along the LAC, and now this strength of each patrol will consist of 14 to 15 troops to avoid clashes. Patrol programs will be coordinated with any clashing dates being mutually modified to prevent misunderstandings. So while agreements have been reached on Depsang and Demchok, friction points like Galwan Valley and Pangong So remain unchanged. Okay, so discussions regarding this eastern sector, especially with respect to Arunachal Pradesh, are still ongoing. This pact aims to restore trust between the two countries, and both sides aim to reduce the overall deployment of troops along the LAC. Okay, so this pact has rekindled hopes of early restoration of diplomatic and bilateral ties between the two sides, and this agreement also assumes significance since the Chinese side until a year ago showed reluctance to even discuss them, while
agreed on disengagement at other fixed friction points. Okay, why Depsang Plains is significant? Because it is 30 kilometers southeast of the strategically important Daulat Beg Oldie post, which is near the Karakoram Pass of the in the north. Okay. So the next topic is e-Shram. This topic is important for your governance section. So recently, Union Ministry of Labour has launched this e-Shram one-stop solution in New Delhi, which will provide seamless access of different social security schemes to the unorganized workers registered on e-Shram portal. So the primary purpose of the e-Shram one-stop solution is to simplify the registration process for unorganized workers and to facilitate their access to government welfare schemes. This platform will act as a bridge connecting the workers to the numerous benefits offered by the government and making the registration process easier and more transparent. Okay. So, what is this e-Shram portal? It was launched by the Ministry of Labour and Employment in 2021 for registration and creation of comprehensive national database of unorganized workers. Okay. So the next topic is malaria. This topic is important for your social issues. So Egypt has been officially declared malaria free by the WHO. So what is malaria? It is caused by plasmodium parasites which are spread to people through the bites of infected female Anopheles mosquitoes. So it is a life-threatening disease primarily found in tropical countries. So the first symptoms of malaria usually begin within 10 to 15 days after the bite from an infected mosquito. Fever, headache, and chills are typically experienced. So, in malaria endemic areas, people who have developed partial immunity may become infected but experience no symptoms. So, the prevention is basically focused on vector control. Okay, so as to prevent malaria and reduce transmission, and this is a preventable disease and it is also curable. Okay, early diagnosis and treatment can reduce the disease and prevent deaths and also contribute to reducing transmission. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.